Good morning. I'm going to present the awareness of NMEICT products. NMEICT, the full form is known as you know, that is National Mission of Education through ICT. Now, this NMEICT is a mission that has been developed by MHRD, and this mission has some objectives. Actually, you know that we have so many, you know, the e-contents or the some other contents also with us, but all these materials, whatever is with us, that is not actually disseminated to the students. Now, what mission has said that we can provide the education to through ICT to the students of rural areas also, so that we can reach to the rural areas and our knowledge can be, you know, disseminated to the rural area students and all. So that was the basic mission of the education, this mission, National Mission of Education through ICT. And if you say the objectives, so I have just listed some objectives. That main objective is to make available the NMEICT e-content to the teachers and students of technical universities and engineering colleges. And also the polytechnic colleges, definitely now they are in the mind that why not to reach to the polytechnic college students. So there are various types of e-contents, you know, not only for in the technical side, it may be in the art side, it may be in the management side, it may be in the social humanities side and sociology sides, English, Hindi, like this. So they want that so many material has been developed by so many universities, in fact, within India. But all these e-contents are not, you know, reachable to the students, who are the main target of our colleges and institutions. It is not reaching. So first objective is to make the make available the NMEICT e-content to the teachers and the students. First of all, it will reach to the teachers so that they will be able to teach the students the available e-content, and also to the students. Next objective is to extend the reach of NMEICT through providing awareness about the cost-sharing internet access and access devices to institutions. What NMEICT says, that if we want to reach, or if we want to send the e-content to the rural side or rural students, then what exactly you need the internet connectivity to each and every organization or the institution. That is the main concern. So NMEICT says that we will provide you all the internet connectivity. First of all, it was the broadband connectivity, and afterwards they have said that if the optical fiber cable, it has been reached to the the areas or the institutions, nearby institutions, then we can provide the leased line connectivity also. So BSNL, they have given the BSNL the whole duty to the BSNL to provide the internet connectivity to rural, polytechnic colleges, engineering colleges, and all the universities also. Definitely in the universities and the engineering college, if you say, then already they have the internet connectivity, and they are getting the 10 Gbps connectivity in the university and 100 Mbps connectivity to the institutions or the organizations. But when we come to the polytechnic colleges, they are actually, we are in written, we say that we have given them the 10 Mbps, but finally actually they are giving they were giving the BSNL were giving the broadband connectivity, and which were restricted to this is principal room and the HOD's room, and that's all. It was not reaching to the students. So nowadays they have started to give the leased line connectivity to the institutions. So wherever the students are sitting in the lab or anywhere else, so they will be able to access the internet connectivity, and that will be cost sharing basis. Cost sharing in the sense that will be 70-30 cost sharing. 70% will be given by the MHRD, and 30% will be given by the institutions or the board or the universities.
right? And they have given another concept that we will provide the access device in the sense it in the name of, you know, tablets, but it can be the access device in any computer peripheral. It may be the laptop, it may be the, you know, scanner or printer or a tablet, whatever you want to purchase. Teachers, it will give to the teachers, it will not be given to the students, it will be given to the teachers. But access devices, they have you know, they have given the restriction that only the 20,000 per faculty member we can provide to per institutions, right? And 100 faculty member, they have given the restriction per institution. That means if your institution has the 50 faculty member, then they will give to the 50 faculty member. If you have the 200 faculty member, then they will restrict to the 100 faculty member, and each and every faculty member will be provided 20,000 rupees for the access devices. And out of this 20,000 rupees, 10,000 will be provided by the MHRD and 10,000 will be provided by your own institutions, because your institution should agree all these, you know, the memorandum of understanding, so that when we go to the memorandum of understanding, then all these points will be displayed. Then another is your build capacity for the e-content generation and establish the logical linkage between the different activities. That is important because till today what we are doing, we are getting the e-content, you know, NPTEL e-content is there, some other university, DTU, we get some you know, video lectures, some MITs also we are getting some video lectures and we are using it. But NMEICT says, why not to you know, strengthen yourself? It is for the teachers that you can also generate the e-contents. And they have given the NITers, actually there are 4 NITers, as you know, NITer Chandigarh, NITer Bhopal, NITer Kolkata and NITer Chennai. And they have given the duty to all these 4 NITers to create the video lectures for these diploma students. You know, the two branches we have been given, and now we are in the process. So we will definitely prepare these video lectures with the help of yours only. You will be the teachers, you will come here and you will make the video lectures, and after that, that will be disseminated in all over India. You know, NMEICT sakshat.com that website. So they are telling that you use and you strengthen the you know, capacity of the teachers of the polytechnic colleges and the engineering colleges, and as well as your teachers, and you generate the content yourself according to the need of the diploma students or the engineering, because for the engineering students we already have the NPTEL content, but for the diploma students there is no such you know, content has been developed, because NPTEL content somewhat you can say 30-40% it may be useful for the diploma students, but not all. So what we are taking care of, NITer Chandigarh and NITer, all the other NITers are taking care of basically for the you know, the diploma students. In NITer Chandigarh we have been given the 2 branches, electrical and electronics combined, and also the IT. Similarly in Bhopal they have been given the computer science and other branch like this. So all these NITers will be creating the e-content generation with the help of you teachers. This is another objective. Another objective is to sensitize the teachers in using the ICT, because you know, as a teacher we know that what are the advantages of ICT, what are the advantages of video lectures, what are the advantages of e-content, but then also somewhere we are restricting ourselves to using these video lectures. So first of all, it says that you sensitize or you teach the teachers, or you give the awareness to the teachers that how the ICT can be used as a solution for the quality improvement, and train the teachers. After that only those teachers can be you know, can give the lectures to the students. Provide anytime availability. It is possible anytime availability of desired knowledge. It is possible only if you have the internet connectivity. That they have taken care of. Provide content in different pedagogical format to provide a variety of learning experience to the students. We will provide the content, of course, not only on the video lectures, but we will provide the PDF format, we will provide the PPT, we will provide the assignment, we will provide the examples. So all these things will be combined in your lecture. And
the integrate the use of NMEICT resources in the technical curriculum. That is most important, because when we as a teacher, when we come to teach the class, we generally consider the our curriculum. Now, if your curriculum does not include the NMEICT, all these e-contents, then it is of no use. Students will not learn just like this, that for their extra knowledge. They will learn if those NMEICT products or NMEICT e-contents, whichever we have generated, will be, if it is in the technical curriculum, then only students will be interested. So our main motto will be that to integrate the use of these NMEICT resources in the technical curriculum. Certification of attainments of any kind, of any level, that we have started already. The NITER Chandigarh has given the one certificate. You can see in your NITER Chandigarh website, we have given that ICT tools in technology and learning. We have given that certificate course, and this certificate course will be, we will be teaching you the e-content generations, and also the the open source software to use this, prepare this e-content generations, and also for animation, for video modifications of video, modifications of image, everything, and all these things will be dependent on the only the open source software that we have taken care, so that the teachers, whoever will be learning and whoever will be doing this certificate course in ICT tools in technology and learning, so they will be able, anytime they can go anywhere and they can develop themselves. They don't have to depend on the commercial software. That is our main motto. So that's why we have given only the open source softwares. That will be started, I think, in November or September. I think, I'm not so sure. I think from November we will start. Then of course there is to provide the ebooks and the e-journals, that I have given the links, that how you can get the ebooks and the e-journals, which are the part of this NMEICT resources and the products. Now I will come one by one. First project is your NMEICT project, is the tablet, that is known as your Akash tablet. Now in this figure you can just diagram, you can just picture, you can just see that Akash 2 was formally launched by Honorable President of India, that is Shri Pranab Mukherjee ji, on 10th November 2012 with the help of IIT Bombay, and Professor Deepak Phatak was the pioneer for creating this Akash 2 tablet. So nowadays Akash 3 has come and Akash 4 had come, and definitely the Akash 4, he is Professor Deepak Phatak, and another professor you are seeing that he is Professor Kanan Mugdalia. So both of them are from IIT Bombay. So they have just developed this Akash 2 first starting. After that, nowadays Akash 4 has come under DGS and direct contact also. The tablet you will get many in Samsung, you will get in different companies. Though so many companies are providing these tablets, and their looks is quite good and all these things. But IIT Bombay has just thought of the rural students who cannot just spend this 4,000 or 5,000 money for this tablet. If you consider in Chandigarh and Delhi, the students are quite, they are definitely their parents can give their students, their teenagers, these tablets, but in rural areas it is not the case. So this Akash tablet has made the lowest cost, so that the students can get the knowledge of the teachers, the PPTs, and they can see the PPTs, they can use the open source software, they can use the net, they can see all the e-contents, and they can see the e-books. All these things are possible in case of this Akash tablet, and it is of lowest cost. So this is your first product that has been developed, that is your Akash tablet. Next product we will say, that is to develop the open source software to, not develop, I will say that some application they have developed with the help of this open source software. First, they have taken about the Python. Python, is a very strong open source software for developing this application.
and IIT Bombay has taken care of that. I have shown that Professor Kanan is the pioneer of taking this section, that is to use the open source software for application development, right? So first application, the software he has taken consider, one is your Python. Second software they have considered as a Scilab programming. So these two softwares they have taken as a open source software, which they have used for creating the different types of application. What application? Now these are the application. First of all, OSCAT. You must be knowing about the ORCAT, so which is used for the circuit designing. So that in compared to ORCAT, the electrical people must be knowing, they have used the OSCAT, right? That is open source. Through the open source they have used, and this is free of cost. Anywhere you can go to the IIT Bombay website और Google में आप जा सकते हैं. Google में जाके जैसे ही आप OSCAT के बारे में देंगे तो OSCAT का जो executable file है that will be downloaded, मतलब it will be shown to you. वो आप डाउनलोड करके एनी टाइम आप ये सर्किट डिजाइनिंग, सिमुलेशन, पीसीबी डिजाइनिंग ये सारे आप कर सकते हैं. फायदा क्या है इसमें, दैट ड्यू टू द ओपन सोर्स you don't have to depend on your management or organization that they have to pay or you have to pay something for the commercial software. Any teacher can go anytime. IIT Bombay website में भी है और simple आप Google में भी सर्च करेंगे, you will get it. So electrical के लिए ये बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा helpful है, जो आप students को सिखा सकते हैं. OSCAT, this is the team developed by FOSSEE, free open source software team, and this team has been headed by Professor Kanan Mogdalia, जैसे मैंने आपको दिखाया, at IIT Bombay. Another open source software they have given, that is your OpenFOAM. That is your fluid dynamics toolbox, that is applicable for the mechanical and also for the civil engineering. So CFD toolbox they have given to solve anything about this complex fluid flows. So if you want, you can use this OpenFOAM, right? That is be for the heat transfer to solid dynamics, electromagnetics. So everything, civil, mechanical, all these things are taken care of by this OpenFOAM. This is simulation software. Scilab that I have told you, that is the best alternative of MATLAB. You know that we are doing the research work. Many of you must be doing the research work in MATLAB, right? C++ पहले हम लोग यूज करते थे, उसके बाद जब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए MATLAB आ गया तो फिर हम लोग MATLAB यूज करना शुरू कर दिए. अब MATLAB इज योर कमर्शियल सॉफ्टवेयर. ऑफ कोर्स हम लोग कभी कभी जैसे आप लोगों ने पायरेटेड वर्जन भी आप यूज कर लेते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू. सो और इट इज नॉट ethical also. So sometimes we have to depend on the management to this expand say for example 25 lakhs for this MATLAB licenses. So what IIT Bombay has developed, so they, with the help of the Scilab community, they have developed the Scilab as a free and open source software, which you can download from scilab.in, www.scilab.in. So that is the site. वहाँ पे साइट में जाके Scilab की जो भी वर्जन है, न्यू वर्जन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ MATLAB. मतलब MATLAB में मैंने ये देखा हुआ है, कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं जो Scilab में है बट MATLAB में नहीं है. बहुत इजी है Scilab में और जनरली इट इज सेम. मतलब जो लोग MATLAB में कंफर्टेबल है, यू कैन जंप टू द Scilab प्रोग्रामिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Scilab में जैसे MATLAB में आप लोग यूज करते हैं, MATLAB में हम लोग सिमुलिंक यूज करते हैं फॉर द सिमुलेशन. यहाँ पे Scilab में हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, दैट इज योर XCOS, X एंड COS. तो इस टाइप की बहुत सारे कमांड्स हैं जो इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, आपके कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स, फिर न्यूरल नेटवर्क टूल बॉक्स, सारे टूल बॉक्सेस, मैकेनिकल के मेकाट्रॉनिक्स के टूल बॉक्स, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ आपके टूल बॉक्स, जस्ट लाइक लैब व्यू जैसे आप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे आप Scilab भी आप यूज कर सकते हैं. सो these are the main open source software I have just listed out. There are so many, but I have just listed out 3 or 4 just to tell you that in NMEI city, that is also one of our concern. One is your tablet we have kept, another is your actually जो tablet बनाया गया है, तो tablet के अंदर भी सारे open source है.
सारे ओपन सोर्स, जो भी आपने साइलैब के लिए बनाया, जो कुछ एप्लीकेशन बनाया, आपके क्विजेस के लिए एप्लीकेशंस बनाया, प्रॉक्सिमिटी के लिए एप्लीकेशन बनाया, क्लिकर के लिए एप्लीकेशन बनाया, जितने सारे एप्लीकेशन डेवलप हुआ सारे के सारे ओपन सोर्स में डेवलप हुए. सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द मेन प्रोडक्ट की वी शुड यूज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर and we should develop ourselves also to use this open source software. Now another is your consortium of this e-content portal, that is your it has been given to the Delhi University to develop some e-content on various various topic. It may be on the pharmaceutical microbiology, it may be on the English, it may be sociology, anything. So I will just tell you that how to go about it. So this is your if the net is connected or not, just let me see. So this is your consortium of just 1 minute. Okay, so so this is your एक वेबसाइट है, दिस इज नेम इज योर कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन. इसके साइट का नाम है cec.nic.in, cec.nic.in, Consortium of Educational Communication. So they have developed many, that art and culture, literature, language, social science, management and natural and applied science. तो आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में अप्लाइड साइंस की भी फैकल्टी होंगे, मैनेजमेंट के भी फैकल्टी होंगे, so you can guide them. So this is one of the consortium who has created many the material जो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, मैंने एक जस्ट क्लिक करके मैं दिखाती हूँ. जैसे आर्ट एंड कल्चर मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. अब इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर नीचे यहाँ पर सारे कुछ आपके पास आ जाएंगे जो जो आप चाहते हैं, जितने जितने बने हुए हैं इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपके ग्रामर के ऊपर आपके बने हुए हैं, जैसे 11 लेक्चर्स बने हुए हैं. तो जो भी आप देखना चाहते हैं तो ग्रामर में आप क्लिक कर दीजिए. उसके बाद ग्रामर में भी जितने सारे, जैसे वायल्स के लिए आपको चाहिए, या वर्ड के लिए, या सेंटेंस मेकिंग के लिए, या कुछ भी जो भी आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, कुछ आप डिक्शनरी है उसके लिए, तो जो जो चीज है वो आप वहां से क्लिक करके, मतलब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, दिस इज फॉर मे बी आर्ट के लिए, बट वहां से भी कुछ कुछ चीज जो आपको जरूरत है, आपके मतलब जो आपके फैकल्टी की जरूरत है, वो चीज आप कवर अप कर सकते हैं. इसे जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने लिया इंग्लिश का. ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे होंगे, ऐसे आपके जो अप्लाइड साइंस है उसके लिए भी बहुत सारे होंगे. सो दिस इज वन साइट दैट इज नोन एज cec.nic.in. It will give you the many inbuilt in e-content which you can use for your own work. जैसे यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस के लिए है, जो जो बने हुए हैं वो है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल साइंस, जैसे बायोकेमिस्ट्री है वो आप अप्लाइड साइंस में यूज करते होंगे, नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट है, कहीं पर जो भी आपको जरूरत है दैट योर फैकल्टी कैन यूज इट. सो दिस इज अनदर वन. सो ये क्लोज कर ले, चलो क्लोज ना भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now again let us go to the PPTs. So okay. Okay, next one is your e-yantra. अभी चाहिए मुझे ना बार बार, है ना. Next product is your this was my first product that I have told, CEC content portal, that has been covered. Next is your next NMEICT product is your e-yantra. It is a very interesting product that has been, it is connected with the robotics. IIT Bombay has created one small robot, and with this robot you can develop your application, right? So this is your robot they have created,
And with this robot, they have told that you can develop some open, with the help of the open source, you can develop some solution, or you can develop your own laboratory also. So what MHRD is giving, they are telling that e-yantra, to set up the e-yantra lab, you need 5 lakhs per institution, right? 5 lakhs each per institution they are giving. That is for creating the e-yantra lab. So e-yantra lab, and this 5 lakhs, definitely I think so that it is not been given by the MHRD, that will be on your own institute. So again, I am going to the website, that is eyantra.org, and I will show some video clips that how this e-yantra can be used for the different applications, so that you can just get one essence that what is the. ये तो सी सिखाया है, क्लोज ही कर दो मुझे। ये अंतरा क्या था, डॉट वर्ड स्लैश ये पीछे आ गया ना, ये अंतर, राइट, आ जाएगा उनको। Okay, so this screen is shared. So this is the website, that is your www.e-yantra.org/home. Home is your that eyantra.org home site. So here you can get a short film about this eyantra. I can just show you that what they have told. So I don't think so his voice chala jayega wahan pe. Let us see. नहीं जाती, जरा क्लोज कर दूंगी। In a rapidly growing economy like we have in India, the other centers, you are getting the voice? Scale. We are growing almost at the same rate as that of China, but only about 10 years behind. We need a large number of people in the economy who can build complex machines. He is Professor Kavi Arya. He is from IIT Bombay, and he is the pioneer of this e-yantra, for factory automation, for consumer devices, and such like. Unfortunately, most of our engineering colleges are turning out students who have a lot of theoretical knowledge, but not enough practical knowledge. Now, by tackling a real world problem in the small using this robot, the students pick up very important skills. They learn how to articulate their ideas, they learn how to work as a team, they learn project management, and they learn how to solve hard problems in the small. This is a device which is like a ubiquitous, versatile platform on which you can build larger, more esoteric kind of devices which are domain specific
for the farming purposes, for trading purposes, for moving around, carrying goods from one place to another. So the imagination is the ultimate frontier in some sense. E-Yantra designs real-world problems into a game where students use imagination and innovation to solve problems in a fun way through the E-Yantra robotics competition. So they organize some, मैं close कर देती हूँ उसको. They organize some competition also, and your students, if you set up the lab at your own organization, then you can also, your students also can take part. That can be, there's a forward step to reach to the students and to give them the idea that in all over India or in IITs what type of work is going on, and we have to give the students that confidence that you can also do it. So if we can set up this type of lab in our organization or our institution, then we can give the students the scope to interact with IITs. Now again I am coming back to the presentation. Right. Next. Okay, so another subject is your PG Pathshala. This is another project. PG Pathshala is basically for the PG students only. PG in the sense it is highly the high quality curriculum based interactive content in different subjects in social science, arts, fine arts, humanities, natural and mathematical science, linguistic, languages. It is known as your EPG Pathshala. So this is your link. That is EPGP. You can just note down EPGP dot inflibnet inflibnet dot ac.in, एंड उसके बाद आप about.php आप करेंगे तो फिर हम लोग वहां पर inflib.net पे यहाँ पर परमजीत बार मुझे चाहिए होगा अभी, आई एम सॉरी, बट वो लिंक मैंने डाला हुआ था so that you can just get to know that what does it. So EPG Pathshala, that is a very important product of NMEICT for this, all over India, all the universities and the colleges, they are using this EPG Pathshala. And here there are some, if you are from the computer science, some computer science, some subjects are also covered up. That is 77 subjects have been covered up with this e-content. मुश्किल है, नहीं तो नेक्स्ट चले जाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना, या तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं. EPG पाठशाला देख लेते हैं. नीचे हाँ ये वाला Yes. So sharing हो गया.
Okay, so this is your EPG Pathshala, epgp.inflip.net, inflipnet.ac.in. So यहाँ पर आप देखिए NMEICT के बारे में जो जो अपलोडेड कंटेंट्स है सारे के बारे में आपको पता लगेगा. ये सारे अपलोडेड कंटेंट्स हैं. अब देखिए एडल्ट एजुकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर्स हैं उनके लिए यूज हो सकते हैं. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट की बात है. यहाँ पर आपके कॉमर्स है, उसके बाद आपके फिजिक्स है, इसकी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है. तो इसमें आप अपने फैकल्टी को जब आप बताएंगे, जो लोग आप अभी अभी आप क्लास कर रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, so you should know all these links and you can give the knowledge to your teachers, whoever is concerned teacher, so that they can use it. Particularly it may not be useful for all the teachers, but that may be useful for this particular teachers, right? So this is your e-content, sorry, EPG Pathshala. Now क्या करते हो आप? Control Escape, Alt Tab. Okay, I'll try next time. Okay, next another one. यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं बाद में इकट्ठा दिखा दूंगी आपको सारे ना ये जो लिंक है. अभी मैं सिर्फ बता के जाती हूँ बिकॉज टाइम वेस्टेज हो रही है यहाँ पे. एक प्रोडक्ट है एनलिस्ट. एनलिस्ट का फुल फॉर्म ये बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट. It is very interesting. It gives us the library and the some e-journals and e-book site, that is matlab already they have given your organization have to be registered all the with this enlist. I think rupees 5,000 or 10,000 या 6,000 rupees है. उसको आपको पेमेंट करके ये एनलिस्ट जो वेबसाइट है इसका रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए. जब आप रजिस्टर्ड यूजर आप होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली योर स्टूडेंट्स कैन यूज द ई बुक्स एंड द ई कंटेंट्स विच एवर इज अवेलेबल, ई जर्नल्स विच एवर इज अवेलेबल इन एनलिस्ट. मैं बाद में आपको इसका लिंक करके आपको मैं दिखा दूंगी. यस, we can't see the slides, it is not clear. Okay, I'm from TTC Jodhpur. Okay. How are you? Fine. Now it is clear? Not young. Now fine. Now it is okay? Now it is okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, previously I was just telling you that is enlist. So I will just give you the demo of this, that how this, what is the site. You can just note down the site name, that is your enlist.inflipnet.ac.in. Actually basically inflipnet is a website has been created by the MHRD itself. एंड वहां पर ना, वहां पे एक लिंक भी होती है जहां पर आप अपने फैकल्टी के जो अपने प्रोफाइल है वो आप डाल सकते हो. वहां पर एक विद्वान करके है, VIDWAN, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना विद्वान, वो विद्वान करके एक लिंक है. वहां पर जाके आप अपने फैकल्टी के जो प्रोफाइल है वो आप वहां पर दे सकते हो. सो यू विल बी कमिंग इन योर विद्वान लिस्ट. So it is so that in MHRD website your name is coming under this Vidwan list. So you can just try it. So all these products, that is Enlist, EPG Pathshala and everything, that has been connected with this inflip.net.ac.in. So I will just show you afterwards. Another product is your ERP. That ERP, it says actually basically using this enlist only 5,000 या 6,000 rupees you have to give. E-यंत्रा लैब के लिए आपको 5 लाख रुपए आपको देना है. ये ERP जो सॉफ्टवेयर है वो ERP सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है. फॉर एग्जांपल IIT कानपुर हैज मेड द बृहस्पति जो सॉफ्टवेयर है, दे हैड डेवलप्ड ओनली द अकाउंट्स मैनेजमेंट एंड योर आई थिंक स्टोर्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट. So all these softwares are free to use, but if you want to customize according to your requirement, that can also be done.
और कस्टमाइज करने के लिए जो भी खर्चा आएगा आपका, जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, उसका 50% विल बी बोर्न बाय द एमएचआरडी। दैट मींस ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरोल, टैक्स मैनेजमेंट वो सारे हैं, स्टूडेंट मॉनिटरिंग है, स्टोर एंड परचेज रिकॉर्ड्स है, टाइम टेबल जनरेटर है, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट है, नेशनल मिशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारे चीज जो है वो बने हुए हैं। बट you have to, if you want that, you have to customize according to your requirements, your organization. It can be done, or it can be done by the other outsources also, and जो भी payment है उसका 50% will be borne by the MHRD. That is their promise that we will give the 50% when you want to customize it according to your organization. So that is on आपको मतलब बने बनाए ERP आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये next, okay. Next is your talk to teacher program. I don't know, you must be knowing or you may not be knowing that the IIT Bombay and the IIT Kharagpur, they are doing this talk to 10,000 teachers program. Nearly within 1 year, 2 or 3 or 4 programs they are giving. So recently in NITER Chandigarh we have conducted in computer programming through IIT Bombay. So what they say, that you can be, your organization, if you are polytechnic college or if you are the engineering college, you can be also part of this talk to 10,000 teachers program. Till today, talk to 10,000 programs are only for the engineering college teachers. Now this time talk to teacher program, they had told that we can extend to the polytechnic teachers also. Now NMEICT, what they want, MHRD want, that now NITERs will create the talk to teacher program and we will deliver, and all the other centers in the polytechnic or the engineering colleges, you will be one part of this talk to teacher program. Now whatever we are giving it, for example, now also we are teaching through the ICT, and also you may have attended many ICT programs through this virtual conference equipment or through this Google Hangout. But they, in that talk to teacher program, they have introduced one software that is known as your AView software, that is your Amrita Virtual Interactive E-Learning World software. Though IIT Bombay and the IIT Kharagpur, they are extensively using this software, and this software is a VC software, video conferencing software है, और ये free of cost है। अभी हमने चंडीगढ़ में NIT चंडीगढ़ में हम लोगों ने एक VC सॉफ्टवेयर हम लोगों ने खरीदा हुआ है, that is your people link, but उसको 10 lakhs rupees we have spent, right, with this mics and all these things. AView software tells that आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल नाइटर चंडीगढ़ जब आपको कोर्स देते हैं तो फिर इन आर सेंटर द AView setup should be there, server should be set up, that will be R. But in your side when you will be used as a client, आपके सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, एक आपका माइक चाहिए और एक आपका कैमरा चाहिए. तो इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे गूगल हैंगआउट के साथ भी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये तीनों चीज से आप कर सकते हैं, बट उसमें कुछ फीचर्स आपके एक्स्ट्रा दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल आप चैटिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पर आप मतलब होल्ड करके रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल हैंगआउट में मैक्सिमम आई थिंक 10 या 14 सेंटर्स है या 14-15 सेंटर्स होंगे मैक्सिमम, बट वो AView सॉफ्टवेयर के साथ आप 500 सेंटर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. जब IIT बॉम्बे या IIT खड़गपुर कर रहे हैं तो फिर इकट्ठा 387 सेंटर्स दे हैव कनेक्टेड विद दिस इन दिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो दैट इज वन एडवांटेज. इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकते हैं, ऑल दिस एडवांटेजेस आर देयर. So they use this talk to teacher program, and we are also setting up this AView server setup in NITER Chandigarh. Another is your virtual labs. That is very important. परमजीत आपको फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे. Virtual labs is very important. हाँ, क्लिक ना करूँ? अच्छा, ओके. vlab.co.in, बस मैं वहां पर चली जाऊंगी. VLab जो है ये आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है.
मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो साइट है दैट इज योर vlab.co.in, बस दैट्स ऑल, www.vlab.co.in। उसमें आप डिफरेंट आईआईटीज के नाम आप देखेंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिस, आईआईटी दिस। सो कोई भी आईआईटी में जब आप क्लिक करेंगे तो फिर जितने सारे वर्चुअल लैब्स बने हुए हैं वो लिस्ट आपके पास आ जाएंगे। तो to the okay, yes, so this is your actually virtual labs sharing, okay? Okay, so this is the the screenshot of this virtual labs. So virtual vlab.co.in, यहाँ पर आप साइड में जब जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, सो डिफरेंट आईआईटीज का नाम होंगे। जो भी आईआईटीज में, कोई भी आईआईटीज में आप क्लिक करके देख सकते हैं, ईच एंड एवरी आईआईटीज में बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईआईटी दिल्ली में भी क्लिक किया, अब इसमें सारे वी लैब्स जो है यहाँ पे सारे बने हुए हैं, जैसे वर्चुअल लैब रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, वायरलेस लैब, एपीजीए एंड डिजिटल डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैम्स के लिए है जो आपके नैनो टेक्नोलॉजीज में यूज होती है, स्ट्रक्चर्स एंड द डायनामिक्स लैब, नेटवर्क मॉडलिंग लैब, वर्चुअल माइक्रोवेव एंड एंटेना लेबोरेटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए जरूरत है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एफपीजीए एंड डिजिटल लैब में मैंने क्लिक कर दिया। अब इसमें कुछ बने हुए होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट बने होंगे उसके बीच में, तो जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं उसमें क्लिक करके आप उसी एक्सपेरिमेंट, देन स्टेप बाय स्टेप वो पूछते रहते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट में आप करना चाहते हैं तो फिर पहले आप वेरिएबल सेट करते हैं, पहले आप वहां पे इक्विपमेंट क्या होते हैं, उसके वेरिएबल क्या है वो आप सेट करते हैं, लाइक दिस इट विल गो ऑन। ओके, सो दिस इज योर फॉर एग्जांपल वर्चुअल वायरलेस लैब। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर शायद वो लगाए नहीं होंगे इनको, यहाँ पे ये रहा एक्सपेरिमेंट्स, राइट, ऊपर होती है एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट्स क्लिक करेंगे, सो दीज आर योर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो एक एक एक्सपेरिमेंट्स में आई एम नॉट द पर्सन ऑफ एंटेना, तो फिर जैसे आप एक्सपेरिमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, देन एक्सपेरिमेंट्स पे आप जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग नाउ इट विल टेल दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द थ्योरी, यू नो। तो स्टूडेंट के पास जैसे व्हाट इज द बैंडविड्थ, डायरेक्टिविटी एंड गेन क्या है, ऑल दिस थिंग्स, एंड ये सारे आप देखिए, रेडिएशन पैटर्न एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आपको कैसे करना है वो नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप करते जाएंगे, तो फिर वो आपके पास जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, फिर आपके ट्यूटोरियल बेस का इसमें है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें हेल्प क्या है कि जब आप स्टूडेंट्स को आप प्रैक्टिकल कराते हैं, एंड आई सपोज कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, सारे में ये आपके फैकल्टी के जो कमियां हैं वो एवरीबॉडी इज फेसिंग, इंक्लूडिंग अस। सो आप में से कभी लैब में हो सकता है कि आप प्रॉपर आप लैब के सेटअप आपके पास नहीं है, बट आप दिखा भी नहीं सकते बच्चों को, तो फिर आप वो लिंक, एक्चुअल जो लिंक है वो आप स्टूडेंट को आप दे सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप वो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद एज ए टीचर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। सो वी लैब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल which NMEICT has developed. Right now, let us go again to my project presentation. So मैंने just एक बार आपको बता दिया, तो फिर आप लोग definitely one by one you can just click on it and you can just check it up, and आपके सारे फैकल्टी है उनको भी आप बताइए इसके बारे में, so that they can also see that what type of
is there. Okay, thank you. Next is your go back. Okay, this is a very strong tool. That is your spoken tutorial, right? Spoken tutorial, by name only you can understand that it is only giving the audio. Not only audio, say if you want that you want to learn about any language, for example C, C++. So it will give you the audio and it will give you the the instructions that whatever you have to run, but it will not give the video of the faculty member whoever is teaching, right? So spoken, that's why it is known as your spoken tutorial, and it is very easy to create also. They have created this spoken tutorial using the Cam Studio, CAMSTUDIO. Cam Studio is a open source software जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आपके जो स्क्रीन में आप लिख रहे हैं वो सारे वो कैम स्टूडियो कैप्चर कर लेते हैं, और साथ साथ आप बता भी रहे हो तो फिर उसके साथ ही वो ट्यूटोरियल बन जाती है. So they have used this Cam Studio to create this spoken tutorial. Spoken tutorial अभी तक जितने spoken tutorial है लिस्ट में है, IIT Bombay is definitely taking this lead to this spoken tutorial project, और उसमें मैक्सिमम जो है वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस एंड IT रिलेटेड है. ऑफ कोर्स मैकेनिकल के रिलेटेड, आपके सिविल के रिलेटेड वो भी सारे कुछ है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, ट्यूटोरियल आर अवेलेबल in this spoken-tutorial.org, right? And you can conduct the workshop for your student also. I have conducted many workshops for my ME students and for diploma students. Even I have conducted for the school students also. Here there is a one school, Carmel Convent School, वहाँ पे 12th class के बच्चों के लिए मैंने ये tutorial workshop कराई है in Python. सिमिलरली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए मैंने सी के ऊपर कराई है. सो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर इस साइट पे आप जब जाएंगे spoken-tutorial.org, उसमें आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, रजिस्टर योरसेल्फ एज ए वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर, ठीक है? तो जो भी फैकल्टी आपके वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर एज ए रजिस्टर कराते हैं, इंस्टीट्यूट को आप रजिस्टर कराते हैं, जब आप इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करा दिया तो फिर आपको एक कंडक्ट करानी पड़ती है स्पोकन ट्यूटोरियल वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स. ये 2 आवर्स वर्कशॉप है, जस्ट 2 आवर्स. वो 2 आवर्स में क्या करेंगे, वो आपको थ्रू द स्काइप ओनली दे विल कंटैक्ट यू or they will tell about this spoken tutorial workshop and what are the advantages and how to read that material from that website and all. उसके बाद जो भी टॉपिक के ऊपर आप वर्कशॉप करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने C++ पे ऊपर करा रहे हो, या फॉर एग्जांपल आपके ब्लेंडर जो है दैट इज योर एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एनिमेशन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आप करा रहे हो, जावा के ऊपर करा रहे हो, लाइनक्स के ऊपर करा रहे हो, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. तो उनमें से जो भी वर्कशॉप आप करा रहे हो, उस मटेरियल जो है वो आपके सारे स्टूडेंट्स को दे देंगे, सारे फ्रीली. स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑन इट्स ओन सेल्फ पेस, ठीक है? अपने आप लर्न करेंगे, घर में जाके खोल के देखे, जो भी आपके मतलब आइडल टाइम है वहां पर खोल के देखे, जब आपके क्लासरूम में बैठे हैं वहां पर खोल के देखे. तो स्टूडेंट्स अपने आप जैसे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगा लिए, तो स्टूडेंट्स ने जब अपने पेज से सीख लिया तो फिर सारे स्टूडेंट्स के लिए आप एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस IIT बॉम्बे. और ऑनलाइन टेस्ट में इफ द स्टूडेंट टेक्स above 45% मार्क्स, ऑनलाइन क्विज जैसे ही होते हैं वहां पर ऑनलाइन टेस्ट, तो 45% मार्क्स आप ले लेते हैं, तो फिर स्टूडेंट ऑनलाइन ही विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द IIT बॉम्बे. एंड मैं जो समझती हूँ एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, इवन डिग्री स्टूडेंट के लिए भी एक IIT बॉम्बे की जो सर्टिफिकेट है दैट विल कैरी मच वेट इन हिज और हर करियर. So I will just ask all the the polytechnic colleges or engineering, whoever is connected with us, and you can also give the give the instruction to other teachers also. You should conduct this workshop under this spoken tutorial for your own students. And if you get any difficulty, any type of question, you can directly contact me either through my email or
with my mobile number. I will give my mobile number also. तो इसके लिए जो कुछ हेल्प चाहिए, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको वर्कशॉप कंडक्ट करानी है, everything I will just teach you. So I suppose as a teacher that आपके जो डिप्लोमा बच्चे हैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो, तो उसमें सारे के सारे बच्चों के लिए एक एक वर्कशॉप आप करा सकते हैं, और ये साइट में जाके आपको सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन से आपके मटेरियल बने हुए हैं, कौन सा कैसे आपको वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर के लिए रजिस्टर करने, एवरीथिंग, एवरी स्टेप्स इज गिवन टू देयर. बट स्टिल इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी. Now I will say that about the MOU between the MHRD NITERS and the State Technical Board and the State Technical University. That is very important because why NITTTR has come into the picture. Why NITTTR has come into the picture. Basically, मैंने आप लोगों को बताया कि NMEICT प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत पहले से सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अवेलेबल थे. IITs are doing that, their best work, you know, for the engineering colleges. But हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स इज नॉट आवर टारगेट. हमारे जो ITI है, डिप्लोमा है, उनके स्टूडेंट्स को हम लोग जब ग्रो कर पाएंगे, दैट इज आवर मेन मोटो. तो फिर ये जाके नेशन की और कंट्री की जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगी. That's why NITER has come to the picture, because NITER is giving the, you know, technical teachers training to the polytechnic colleges so many long years. So that's why MOU has been MOU, one memorandum of understanding has been created between the NITER, MHRD and STBs, and till today we have done the MOU with 4 state technical universities and 4 state technical board, including this Haryana, Rajasthan and all these things. So already I have told the components whichever will be covered under MOU. The objective role of NITTTR was to roll out the products of NMEICT, just like as that I have given you the awareness, facilitate the establishment of e-classroom and quantify the impact more through technology enabled teaching and learning. So I will just divide into 2 parts, that what are the points covered in MOU. First covered is your NMEICT resources, what cost is involved, and another is your which are free of cost. Some free of cost I have already discussed, that is spoken tutorial and review and all these things. I have told this thing to you, that is one point is your internet connectivity, that is also one point on MOU it was there. And I have told that 70-30% cost sharing basis, 70% will be covered by your MHRD and 30% will be covered by your own organization. Organization means your board or your university. Then connectivity up to 10 Mbps. Now it has been given to that leased line connectivity, it will be given. This is also I have covered, that is 20,000 access devices, and maximum 100 faculty they have restricted. And orientation also will be it is needed, because teachers, if they are not oriented, they cannot give you know, the actual, they cannot do the actual justice to the students. So we will give the orientation to the teachers, that we have already started in NIT Hamirpur. We have done for all the Himachal Pradesh, and recently in Haryana we will do in 26th and 27th September for Haryana teachers and for you know, the Chandigarh teachers. And whoever polytechnic colleges from Haryana, and this you will get a letter from NITER Chandigarh and also from NIT Kurukshetra. For Haryana it will be conducted in the NIT Kurukshetra, and for Chandigarh teachers it will be conducted at NITTTR Chandigarh. So this type of orientation program you will get. Certificate program in ICT tools for teaching, that I have already told you that this type of certificate course we have already developed, and we have already hosted this certificate course, and ICT based teaching and learning, ICT tools in teaching and learning, and it will be offered in a blended mode. Blended mode in the sense that will be in contact mode as well as the online mode. That means you have been given, for example, 1 week you know, contact mode classes. After this you will be given the assignment and all these things, and 1 month you will do online.
After that again we will call you for one week or 2 weeks. After that again you will be given for 1 or 2 months. After that we will take, finally we can take your evaluation, we can evaluate you. Just like this you will be covering your certificate course in this. Uh, uh, you can under NMEICT MOU they have told that you can create 5 e-classroom per institution. That means in your institution you can create 5 e-classroom. E-classroom is the somewhat is similar to your smart classroom, you can say, right? And 50% contribution, 50% will be given by the MHRD and 50% will be given by the your university or your organization or your board. एंड ई क्लासरूम में क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्वर रखोगे, सर्वर के साथ कुछ आप जैसे डिवाइसेस भी आप रखोगे, विजुअलाइजर आप रखेंगे, फिर आपके फॉर एग्जांपल स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले आप रखेंगे, फिर आप कुछ स्मार्ट पोडियम भी आप ले सकते हैं, डिजिटल पोडियम आप ले सकते हैं. तो ये सारे जो आपके जो रिक्वायरमेंट है दैट यू कैन सेट अप इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन और ओन इंस्टीट्यूशन. एंड 5 क्लासरूम ऐसे आप बना सकते हो जहां पर 50% विल बी शेयर्ड बाय योर ओन बोर्ड, राइट. E-yantra cost also will be shared on 50% basis. And the total cost जो e-classroom के लिए है, total cost per e-classroom is they are giving that per 3 lakhs rupees. 3 lakhs में 1.5 lakhs will be shared by your board and 1.5 lakhs will be given by MHRD. तो 5 ऐसे ले सकते हैं, मतलब 15 lakhs rupees you can spend, right? Then is your available e-content that I have told you कि mapping the available e-content. That means जितने सारे आपके e-content already बने हुए हैं, नेफ्टल में बने होंगे, और अभी जैसे हम लोग करिकुलम के साथ ही हम लोग नेटेड चंडीगढ़ जो वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं वो सारे हम लोग करिकुलम के साथ ही बना रहे हैं, सो दैट आपको मैपिंग करने में इजी रहे. और उसके बाद ये जो e-contents बनेंगे दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स. आप स्टूडेंट्स को आपने लैपटॉप दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, टैबलेट दे दिया, और उनको बोलो कि आप एक्सटेंसिवली यूज करें, जहां मर्जी, जैसे क्लास मिस हो गया कोई बात नहीं, ये वाले जो लेक्चर है आप ले लो और उसके बाद आप देखो, एंड इट विल बी अवेलेबल, वेबसाइट में अवेलेबल होंगे, राइट. So that will be taken care by NITTT. And under this MOU, another scope is there that you can you can appoint that NMEICT coordinator also at your own institution as well as the university. Similarly, at your board as well as our institutions. मतलब somebody should be there to coordinate. तो वो बोलते हैं कि NMEICT कोऑर्डिनेटर भी हम लोग अपॉइंटमेंट करा देंगे आपको. जब यूनिवर्सिटी के बात आती है तो फिर होती है 40,000, जब इंस्टीट्यूशंस के बात आती है तो फिर होती है 10,000 रुपीज पर पर्सन. दैट मीन्स आपके जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें हम लोग 10,000 रुपीज देंगे, बट जो बोर्ड है, बोर्ड में जो कंडक्ट या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको हम लोग 40,000 रुपीज देंगे. सिमिलरली यूनिवर्सिटी में जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज कनेक्टेड विद सो मेनी कॉलेजेस तो उनके लिए 40,000 है, और पर इंस्टीट्यूशन जो आप कोऑर्डिनेटर रखेंगे उनके लिए 10,000 है. उसमें आप एग्जिस्टिंग फैकल्टी को भी आप रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑल्सो यू कैन अपॉइंट, जिनको आप 10,000 रिम्यूनरेशन आप पर मंथ दे सकते हो. सो दैट ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ this. These are free of cost. That I have already told. That virtual lab I have shown you that how to create, see the virtual labs. ये आपके free of cost है. Spoken tutorial जो है वो भी आपको free of cost है. AView जो है वो भी आपका free of cost है. NPTEL जो है ये हम लोग जानते ही हैं, ये free of cost है. टॉक टू टीचर प्रोग्राम जो है वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है. इन द सेंस जब हम लोग एज ए टॉक टू टीचर प्रोग्राम NITTT विल होस्ट, हम लोग आपको सारे खर्चा देंगे इंक्लूडिंग द लंच एंड ऑल दिस थिंग्स ऑफ योर द स्टाफ मेंबर्स और द फैकल्टी मेंबर्स हु आर अटेंडिंग. तो ये जो एक्सपेंसेस है सारे के सारे जो होंगे दैट विल बी ऑफ MHRD. आपके एज ए इंस्टीट्यूशन आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सॉरी. And the monitoring will be done by the NITTT at Chandigarh under this, that is key performance indicators will be number of teachers, कितने आपने train करवाया अपने own organization पे, कितने students आपने use कर रहे हैं components,
टाइमिंग्स की कितना कितना आप दे रहे हो स्टूडेंट्स में, टाइम शेड्यूल में NMEICT प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, NPTEL कंटेंट आपके सर्वर आपने ई क्लासरूम बनाया है कि नहीं, सर्वर आपने बनाया है कि नहीं, NPTEL कंटेंट को यूज कर रहे हैं कि नहीं. So these are the all the monitoring factors which NITER Chandigarh will do. So that's all about just an overview of this NMEICT products. Now any question from your side? This is just an overview, you know. ये कौन सा है? GCDM. GCDM. Now I'll just ask question one by one. GCDM Sirsa. GCDM Sirsa. Any question you want to ask? TTC Jodhpur. Any questions? Yeah, ma'am. Can we get hard copy of these links so that we can recall it? हाँ श्योर. ये प्रेजेंटेशन कहाँ पे? यूट्यूब में तो नहीं होंगे. अभी ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो गई है. रिकॉर्ड हो गए तो उनके पास कैसे पहुंचेंगे? उनको दे सकते हैं प्रेजेंटेशन? हाँ ईमेल कर सकते हैं. नहीं, जो वीडियो है वो तो रिकॉर्ड हो गई है, तो रिकॉर्ड जो हो वो कहाँ पे? यूट्यूब में है. अच्छा, ये जो मैंने आपको जो कुछ दिखाया ये यूट्यूब में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, और वो यूट्यूब में जाके आप वो लिंक दे सकते हैं. अदरवाइज किसी पर्सनल आप ईमेल बता दीजिए तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ आपको. हाँ जस्ट 1 मिनट, एक पेन होगा. हाँ जी बताइए. हाँ हाँ underscore SH REE हाँ 29 @yahoo.com. मैं आपको मेल कर देती हूँ अभी, ठीक है? Thank you so much. ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? कुछ आप पूछना चाहते हैं? No, ma'am. The informations are really very good and very beneficial for us, and we just want to go through it. So if we have the links, so we'll do that. बिल्कुल. आपने जो, मैं ये चाहूंगी कि आपने जो आपके जो फैकल्टी आप चाहते हैं, जानते हैं कि कंसर्न्ड इसमें फायदा होगा, जो भी साइंस के टीचर है, मैनेजमेंट के टीचर है, उनको आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है ना? जो टीचर जो फॉरवर्ड करते जाएंगे तो फिर वो लोग यूज करें तो दैट विल बी द एडवांटेज. बेसिकली अवेयरनेस का यही फायदा है कि आप लोग यूज करें उसको एक्सटेंसिवली, फिर हमें फीडबैक दे कि हम लोग ऐसे ऐसे यूज किया और स्टूडेंट्स को इतना फायदा हुआ. तो दैट इज आवर बेसिकली, देन दिस लेक्चर विल बी फ्रूटफुल, यू नो. One more thing, ma'am, इसमें जो है ना, जो हम लोग जो we are from women polytechnic, उसमें जो है नॉन इंजीनियरिंग की सारी कोर्सेज चलती हैं. मैंने देखा कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वगैरह था, सिर्फ एक पीजी वाली जो थी उसमें सिर्फ आर्ट से रिलेटेड था, डिजाइन. हाँ. तो उससे मैम इसमें अगर इस तरीके का कुछ और भी ऐड हो सके जो हमको फ्रूटफुल और बेनिफिशियल हो, तो वी वुड लाइक टू. बेसिकली मैम ये तो मैंने आपको ये दिखाया कि विच इज एग्जिस्टिंग, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जो मैकेनिकल के बोल रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये अभी नाइटर चंडीगढ़ इज ऑन द वे ऑफ डेवलपिंग दिस मटेरियल. ऑफ कोर्स हम लोग आपको ही कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों में से कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आएंगे, वहां पर बात करेंगे, हम लोग वर्कशॉप करेंगे, तो फिर हम लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या बनेंगे. बट ये मैंने ये दिखाया कि जो कुछ अवेलेबल है वो तो हम लोग पहले यूज करें, फिर हम लोग जो बनाएंगे वो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर योर स्टूडेंट्स आल्सो. Finally, ma'am, there is a potential in this field. जो women polytechnic में जो काफी सारे branches चलती हैं, जैसे commercial art है, graphics में, हाँ बिल्कुल, fashion technology है, fashion designing है, interior decorations है. Right. So इससे concern बहुत कम मिलता है material का. So this is really great potential.
मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे ईमेल में, वो फैशन के साथ या उसके साथ भी कुछ नाइटर्स को एक्चुअली हमें दिया गया था पहले, आपके मेरे ख्याल से फैशन के साथ ही दिया गया था या कुछ और टर्म था, मुझे अभी एकदम से याद नहीं है। आफ्टर दैट उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड आप कर लीजिए, उसके बाद आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का करेंगे। तो अभी दो दो करके सारे नाइटर्स को सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड ही दिया गया है। उसके बाद हम लोग डेफिनेटली फैशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये भी हम लोग करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। Now we can have a lunch break up to 2 o'clock. We'll reassemble at 2 o'clock. आप